गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपने पीएफएम का मॉड्यूल डी में हमारा जो लास्ट चैप्टर है यूनिट 30 रारोक एंड प्रॉफिट प्लानिंग स्टार्ट करेंगे और इसे आज कंप्लीट भी करेंगे। ज़्यादा बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी सी स्लाइड बनी है। रारोक इसमें जो है स्ट्रक्चर वही है, इंट्रोडक्शन, प्रॉफिट प्लानिंग, रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन, इकोनॉमिक कैपिटल, रारोक। ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है, जो चैप्टर है उसकी ऑब्जेक्टिव्स रहेगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। वी स्टार्टेड बाय डिस्कसिंग द बेसल नॉर्म फॉर कैपिटल एडिक्वेसी। ठीक है, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। वी देन मूव टू इनकम रिकॉग्निशन। हम लोग इनकम रिकॉग्निशन पढ़ा, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। तो इन दिस यूनिट वी shall see the factors affecting profitability of the bank। कौन कौन से फैक्टर है जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को असर करते हैं। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ द कैपिटल बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल। बैंक को अपनी कैपिटल भी मेंटेन करनी पड़ती है रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। We shall look the various options for deployment of the fund and their impact on the bottom line and capital requirement. The traditional approach for reduction of expenditure and increasing fee-based income will also be touched upon. We shall therefore proceed to review the profitability position of the sub-Indian banks. We shall take a sample of the same prominent public sector and private sector banks and shall examine the relationship between their own fund, between the total assets and profit before depreciation. तो प्रॉफिट प्लानिंग क्या है? बैंक क्या है? हमारा एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर देयर टू अर्न प्रॉफिट। किस लिए है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड गुड रिटर्न्स ऑन द इक्विटी। ठीक है, अगर दे हैव द रोल फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। उनका एक काम क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट का भी है। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी टू द इंडस्ट्री, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कंजम्पशन, हाउसिंग। दे आर द ट्रस्टीज फॉर द डिपॉजिट्स। वो किसके लिए? डिपॉजिट के ट्रस्टी, kept with them and have to perform the sacred duty of protecting the depositors fund interest। ठीक है, they are also expected to give some fixed return to the depositor in the capacity of a trustee। trustee के capacity में for the depositor, bank role may have variance with the its responsibility to maximize the profit for the owners। Banks are therefore required to be cautious in their dealings and manage the risk in a prudent manner। अब कहता है प्रॉफिट प्लानिंग इन बैंक इसेंशियली इन्वॉल्व्स बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग जो है बैंक में वो क्या है? बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, कवरिंग क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड नॉन फंड बेस्ड इनकम। बैंक इनकम राइजेस फ्रॉम थ्री सोर्स। बैंक इनकम कितने सोर्स से आती है? थ्री सोर्सेस। पहला इंटरेस्ट, दूसरा फी बेस्ड एंड ट्रेजरी इनकम। इंटरेस्ट इनकम किससे आता है? जो हम लेंडिंग करते हैं वहां से, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट से इन सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स। Most of the country there are norms that certain percentage of deposits is mandatory required to be kept in government security। जैसे हमारे यहाँ रखते हैं ना एसएलआर में, तो यहाँ भी है हमारे कंट्री में एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है कुछ पार्ट डिपोजिट्स। तो द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर प्रैक्टिकली रिस्क फ्री। द yield on such investment is lower than when compared to the deposits। ठीक है, अब एसएलआर में आप सिक्योर चीजों में आप इन्वेस्ट करिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा, तो ऑब्वियसली आपको यील्ड जो है कम मिलेगा। सिमिलरली द इंटरेस्ट इनकम ऑन हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड is much lower as compared to the income on lower rated corporate bond। Banks are required to have a proper blending of the investment in government security and credit portfolio to maximize the profit for given level of risk appetite। Let us take example यहाँ पर दिया उन्होंने, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए तेरा कहता है वी लुक एट इट फोर डिफरेंट सिनेरियो एज फॉलोज। ठीक है, 1000 रुपये जो है ना इन्होंने सबसे पहले लिया। सपोज ये बैंक है जो 1000 रुपीज टू इन्वेस्ट और लेंड करने के लिए बैंक के पास। इसके 4 डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। एक टेबल बनाया है इसमें, देखिए टेबल 1 2 3 4। ठीक है, कहता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड यील्ड 6% और रिस्क रेट 0 है, 1004
100 300 300, ठीक है, तो यहाँ दिया। अब ट्रिपल रेटेड कस्टमर्स को अगर देता है, ठीक है, इसने पहले वाले में 0 कर दिया, बाद वाले में 600 दिया, 300 दिया, 300 दिया। लैंडिंग टू डबल ए वाले में इसने 0 कर दिया, 0 कर दिया, ये 400 दिया, 200 दिया। और ये ए रेटेड कस्टमर, तो इसमें क्या है, सिवाय सिर्फ ग्रुप 4 ने 200 करोड़ की लैंडिंग करी। तो अगर इसको देखते हैं तो 3 3 6 तो 8 10 यहाँ हो गया। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1000 करोड़, ठीक है। अब टोटल यील्ड कितना है, इस 6% के हिसाब से इसका यील्ड आपको 60 रुपये मिल गया, एक ही में है ना 6% में। इसमें कितना यील्ड मिला, टोटल 72 रुपये। 4 के हिसाब से यहाँ पे 4 से 24, 8 से 48, 24 और 48, 8 4 12, 72, ठीक है। यहाँ 300 है, तो पहले वाले में 6%, दूसरे वाले में 8% और 400 वाले में 10%, ठीक है ना। ये हो गया 40, 24 और 18, ठीक है, कितना हो गया 82, और ये कितना 86%। तो हमारा यील्ड देखिए, जहाँ पे हमने रिस्क ज़्यादा लिया वहाँ पे यील्ड हमारा ज़्यादा है, ठीक है, 6%, 1.20%। तो रिस्क वेट एसेट यहाँ पर 0 है, कैपिटल भी 0 है, लेकिन यहाँ पर रिस्क वेट एसेट क्या है, 120 है ना, तो कैपिटल कितनी चाहिए, 9.60%, ठीक है। 268, 28, 368, 28.8। Thus you would observe that risk would increase for lending to the lower rated customer, ठीक है ना। लोअर रेटेड कस्टमर को आप लेंड करिएगा तो रिस्क इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज नीड फॉर कैपिटल, तब आपको कैपिटल की प्रोविजन ज़्यादा करनी पड़ेगी, एंड ऑल्सो इम्प्रूव यील्ड ऑन द एसेट्स। बैंक नीड टू ऑप्टिमाइज द इन्वेस्टमेंट फॉर लेंडिंग portfolio to earn the best possible return for given capital. Bank have to take into the account. Bank have to taken into the account the effect of NPA on the interest income and thereby on the profitability. NPA do not generate income. NPA क्या होता है? NPA होने के बाद तो इनकम जनरेट होना बंद हो जाती है, and therefore bring down the yield on advance. एडवांस के ऊपर yield कम हो जाती है. Also under Basel 2 and 3 regime, the risk weight of such asset is higher, thereby forcing the bank to maintain higher capital. Thus NPA have two-fold effect. पहला क्या होता है, NPA के दो इफेक्ट होते हैं। पहला रिडक्शन इन इनकम एंड नीड फॉर एडिशनल टीयर। एक तो आपका इनकम बंद होगा, ऊपर से आपने प्रोविजनिंग चालू कर दी, तो वो आपके प्रॉफिट से गया। हेंस रिटर्न ऑन कैपिटल प्रॉफिटेबिलिटी गेट फर्दर डिक्रीज। अब जो कहता है नेक्स्ट, द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रीवियस एक्टिविटी। पहले तो इंटरेस्ट हमने कमाया। The traditional activities such as demand draft, remittance, safe custody, guarantee, letter of credit, bills continue to be prevalent. However, the technology changes some of these services such as demand draft, remittance, bill handling were reduced drastically. Some new services like depository services, internet banking, e-commerce have appeared on the scheme. These services have been given a boost to the fee income or else have resulted to the higher minimum balance requirement. The bank have been introducing several innovative products and services with the advent of technology. बैंक क्या कर रही है? Several innovative products ला रही है. Bank have also ventured into the cross-selling and other financial products such as insurance policy, mutual funds, and with their established network and position of the trust. ठीक है. Bank can make logical and natural entry in the selling of such third-party products. Banks thus tend to become financial supermarkets, and such measure helps increase the fee based income. Banks are required to keep in mind of operational risk associated with these new services. The last and the most component of the income is treasury. Last में क्या आता है? Treasury, which is derived by the trading in securities, foreign exchange, equities, bullions, commodities. ये सब treasury income के पार्ट होते हैं. यहाँ से treasury income आती है. Regulators have also prescribed various measures in this regard. Bank put in place several risk management measures, such as caps on the positive risk position, mark-to-market valuation, infusion of the capital based on the risk analysis, trading activity. ठीक है.
may provide large income to the bank. This has been in case of many Indian banks during the last 3 years. This activity may result large amount of losses as well. If the bank is not adequately capitalized, such losses can cause serious problems for it. In 90s, Baring Bank, a very old British bank, collapsed due to the very large losses due to the speculative trading in Nikkei future Tokyo Exchange. It is important to undertake trading activity within one means of and exploit the potential to earn more income for the bank. We have so far seen the income side. On expense side, there are two major expenses. Interest expenses. अब एक्सपेंस में क्या आता है हमारा इंटरेस्ट इनकम तो हमने कमाई, ठीक है, अदर इनकम कमाई, ट्रेजरी कमाई। अब हमने क्या एक्सपेंस कहाँ करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट में करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। देयर आर थ्री मेजर पार्ट ऑफ द डिपॉजिट पोर्टफोलियो। पहला करंट डिपॉजिट, जिस पर हम इंटरेस्ट नहीं देते। सेविंग एंड टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हम देते हैं, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट वे डीरेगुलेटेड इन इंडिया विद अक्टूबर 2011। सेविंग डिपॉजिट पर जो था इंटरेस्ट पहले आरबीआई फिक्स करती थी, बाद में उन्होंने डीरेगुलेट कर दिया। And interest is paid on the deposit on daily product basis. But the comfort of the bank and this rate continue to be low. Thus, a bank has to find a way of means to improve the share of the low cost deposit and current and saving bank. The second factor of the expenditure is operating cost, which consists of staff cost and other cost. Bank try to improve productivity and also link up some of the staff cost to productivity by providing incentive based package. Thus, every effort is made to maintain and reduce the percentage of staff cost to the income level. Okay? Thus, every effort to rationalize this segment of expenditure made in nutshell, profitability is a function of six variables. Profitability क्या है? सबसे पहले interest income, previous income, trading income, interest expenses, staff expenses, other operating expenses. इसी पे तो सारा चीज हमारा डिपेंड है ना बैंक का। सारी जो डिपेंड है हमारी बैंक की टोटल प्रॉफिट प्लानिंग जो होती है इसी के हिसाब से होती है। इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड, ट्रेडिंग इंटरेस्ट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जितनी आप यहाँ कहता है मैक्सिमाइजेशन फर्स्ट थ्री वेरिएबल्स एंड मिनिमाइजेशन ऑफ लास्ट थ्री वेरिएबल्स आर द रिक्विजिट टू मैक्सिमाइज। अगर जितना ज़्यादा इससे कमाएंगे और इसमें कम खर्चा करेंगे, ये एक्सेस हाई करेंगे और ये लो करेंगे, तो उतना ही हमारा क्या होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। रिस्क रेगुलेशन एंड कैपिटल। अब कहता है रिस्क रेगुलेशन एंड कैपिटल एलोकेशन। Most of the internally active banks have developed internal process and techniques to assess the and evaluate their own capital needs in light of the risk profiles and business plans. Such banks take into account both qualitative and quantitative factors to assess their economic. The Basel Committee now recognizes that capital adequacy in relation to the economic risk is necessary condition for the long-term soundness of the bank. Thus, in addition to comply with the established minimum regulatory capital requirement, banks should also critically assess their internal capital adequacy, future capital needs on the basis of risk assumed by the individual. So, बैंक को अपना जो है ना असेसमेंट करना है। अब कहता है 10 at the bank head office level aggregate risk exposure should be increased scrutiny. To do so, however, it requires the summation of different types of risk. Banks across the world use different ways to estimate the aggregate risk exposure. The most commonly used approach is the risk-adjusted return on capital. कैपिटल पर हमारा रिस्क एडजस्ट करने के बाद कितना रिटर्न आ रहा है, रारोक, इसे रारोक बोलते हैं। The RAROC is designed to allow all business streams of the financial institution to be evaluated on the equal footing. Each type of risk is measured to determine both the expected and unexpected losses using value at risk method and worst case type analytical method. The key to RAROC is the matching of revenue, cost and risk on transaction of the portfolio basis over a defined period of time. This began with a clear differentiation between the expected and unexpected losses. इससे हमारा पता चलता है। देखिए, under this framework, the frequency distribution of return wherever possible is estimated and the standard deviation of this distribution is also estimated.
Capital is therefore allocated to activities as a function of this risk or volatility measure. Then the risky position is required to carry out expense rated return on capital. तो फर्स्ट अप्रोच हो गया by dimensioning all risk in terms of the loss distribution and allocating capital by volatility new activity risk aggregated price. ठीक है. सेकंड अप्रोच क्या कहता है? सेकंड अप्रोच सिमिलर टू डारो बट डिपेंड लेस ऑन द कैपिटल एलोकेशन. इसमें क्या था? कैपिटल एलोकेशन पे था, इसमें लेस. ठीक है. एंड मोर ऑन कैश फ्लोज एंड वेरिएबिलिटी एंड अर्निंग. इसी रेफर टू एज अर्निंग एट रिस्क. इसे क्या बोलते हैं? अर्निंग एट रिस्क. When employed to analyze interest rate risk under this analytical framework, also frequency distribution of a return for any one of the type of risk can be estimated from the historical data. Economic capital and RAROC. The expected loss is measure the reserve necessary guard future losses. Expected loss कैसे करते हैं? Expected loss is measure कैसे मापते हैं? Of the reserve necessary to guard against the future loss. Pricing of a product should be provide buffer against the expected loss. प्राइसिंग जब होती है तो हमें क्या करना होगा? बफर देना होगा एक्सपेक्टेड लॉस के लिए. एंड अनएक्सपेक्टेड लॉस इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द बैंक फाइनेंशियल रिस्क. दिस कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल. सम एक्टिविटीज में रिक्वायर amount of risk capital, which is in turn requires higher return. This is the essence of the risk adjusted return on capital. The central objective is to establish benchmark to evaluate the economic return of the business. This includes transaction, product, customer trades, and business lines. RAROC is also related to concepts such as shareholder values analysis and economic value added. In the past, performance was measured by the yardsticks such as return on assets. पहले पास परफॉर्मेंस में रिटर्न ऑन एसेट्स को देखते थे, which adjust profit for the associated book value of the assets. Or return on equity, which adjust profit for associated book value of equity. None of these measures risk on return on assets and return on equity is satisfactory for evaluating the performance business line there. अब रिस्क कैपिटल किसे बोलते हैं? ठीक है, रिस्क कैपिटल सिंपल सा है, आपको बता दूं. RAROC is a part of the family of the risk adjusted performance measure. ठीक है. Consider for this as two traders such that each returned a profit of 10 million over the last year. The first is a foreign currency trader and second a bond trader. The question is how do we compare their performance? This is important in providing appropriate compensation as well as the deciding which line of activity spend. RAROC की मेथोडोलॉजी क्या है? RAROC में क्या है? रिस्क मेजरमेंट है, कैपिटल एलोकेशन है, परफॉर्मेंस. ठीक है. फुली एक्सपोजर, वोलेटिलिटी एंड कोरिलेशन. कैपिटल वाले में रिक्वायर्ड चॉइस ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल एंड होरिजन फॉर वैल्यूड रिस्क. This require adjustment of performance risk. PV profit minus capital into K. EV किसे बोलते हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. Focuses on the creation of value during the particular period in excess of the required return of the capital. बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, ये तो एक बार आप देख लीजिएगा. द पास्ट फ्यू डेकेड है. 91 से हम लोगों ने लगभग लिबरलाइजेशन चालू किया ना, उसके बाद से ये सारी चीज चेंज हुए. पब्लिक सेक्टर बैंक, न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड जनरेशन, कोऑपरेटिव, रीजनल, रूरल, स्मॉल फाइनेंस, पेमेंट बैंक. तो ये सब क्या है एक बार देख लीजिए. लेट अस सम अप देखते हैं फ्रेंड्स. अभी CAIIB का एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड है अभी तो जुलाई के में एक्सपेक्टेड है. इसलिए अब हमको जो है ना, हम लोग मॉड्यूल भी कंप्लीट करेंगे और 13 अप्रैल उसके बाद थोड़ा सा न्यूमेरिक्स देखेंगे. ठीक है.
कीवर्ड से यहाँ पे देख लीजिएगा, तमिल क्वेश्चन है रेफरेंस मटेरियल से। ओके फ्रेंड्स, आपका ये लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, रारोक एंड प्रॉफिट प्लानिंग। ठीक है, आप लोग इसको एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन होती है, उसको थोड़ा पुश कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। आप चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन आपका फिर से